Thank you. Om Agyanam Timirandasya Jnana Chakshurmiltamina Tasmai Shri Guruve Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swarupam Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Tapada Kamalam Shri Guru Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagar Jatam Sahaganda Gunatha Vitam Tam Sajivam Sadhvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagan Shri Lalita Vishaka Vedam Cha Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvijesha Sunyavadi Pasadesha Tarine He Krishna Karuna Sindhu Deen Bandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Prishbhana Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpataru Bhasacha Kripa Sindhu Evacha Pratitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jagadguru Srila Prabhupada Jai. जी यहाँ से पढ़ना है. Okay. Reincarnation in this life. The active principle is the soul, and the soul transmigrates from one body to another at the time of death. The body may be different, but the self remains the same. We can observe this change of body even within our own lifetime. We have transmigrated from babyhood to childhood, from childhood to youth, and from youth to adulthood. Yet all the while, the conscious self or soul has remained the same. The body is material, and the actual self is spiritual. When one comes to this understanding, he is called self realized. Okay. Swati Mataji. Professor Durkheim, I think we are now arriving at a very decisive moment in the Western world because for the first time in our history, people in Europe and America are starting to take seriously the inner experiences by which truth is revealed. Of course, in the East, there have always been philosophers who have known the experience by which death loses its terrifying character and becomes the threshold to a more complete life. People lead this experience of overcoming their usual bodily habits, and if they can break through that bodily experience, they suddenly realize that quite a different principle is operating within themselves. They become aware of the inner life. Yes, Prabhuji. Srila Prabhupada, a devotee of Lord Krishna automatically that principle because he never thinks I am this body. He thinks Aham Brahmasmi, I am spirit soul. The first instruction given by Lord Krishna to Arjuna in Bhagavad Gita is this. My dear Arjuna, you are very seriously considering the condition of the body. A learned man does not take this material body, either dead or alive, very seriously. This is the first realization on the path of spiritual progress. Everyone in this world is very much concerned with the body, and when it is alive, they take care of it in so many ways. When it is dead, they erect grand statues and monuments over it. This is body consciousness. But no one understands that active principle which gives the body beauty and life. And at the time of death, no one knows where the real self, the active principle, has gone. That is ignorance. Professor Professor Durkheim. During World War I, when I was a young man, I spent 4 years at the front. I was one of two officers in my regiment who was not wounded. On the battlefield, I saw death again and again.
I saw people standing just next to me get hit, and suddenly their life force was gone. All that all that was left, as you say, was a body without a soul. But when death was near and I accepted that I also might die, I realized that within myself was something that has nothing whatsoever to do with death. Hmm. Srila Prabhupada, yes, that is his realization. There came this experience of war marked me very deeply. It was the beginning of my inner path. Srila Prabhupada, in the Vedas, it is said, Narayana para sarve na kutu sachna bhivyadi. If one is God realized soul, he is not afraid of anything. Yes, Prabhuji. Professor Durekim, the process of self-realization is a sequence of inner experiences, isn't it? अभी अपना ज्ञान बता रहे हैं गुरुपाद को. Here in Europe, the people have gone through such experiences. In fact, I believe this is the real treasure of Europe, that there are so many people who went through the battlefields, through the concentration camps, through the bombing raids. And within their hearts, they retain the memories of those moments when death was near, when they were wounded and nearly torn in pieces, and they experienced a glimpse of their eternal nature. But now it is necessary to show people that they don't need a battlefield, a concentration camp, or a bombing raid in order to take seriously those inner experiences. When one is suddenly touched by a sense of divine reality and understands that this bodily existence is not the all and all. Hmm. Mataji. The body is like a dream. Srila Prabhupada. We can experience that every night. When we dream, our body lies on the bed, but we go somewhere else. In this way, we all experience that our real identity is separate from this body. When we dream, we forget the body lying on the bed. We act in different bodies and in different locations. Similarly, during the day, we forget our dream bodies in which we travel to so many places. Perhaps in our dream bodies, we flew in the sky. In our dream bodies in which we travel to. Uh, कहाँ है? Similarly, during the day, we forget our dream bodies in which we travel to so many places. Perhaps in our dream bodies, we flew in the sky. At night, we forget our waking body. And in the daytime, we forget our dream body. But our conscious self, the soul, still exists, and we remain aware of our existence in both bodies. Therefore, we must conclude that we are not any of these bodies. For some time we exist in a certain body, then at death we forget it. So the body is really only a mental structure, somewhat like a dream. But the self is different from all of these mental structures. That is self realization. In Bhagavad Gita, Lord Krishna says, Indriyani parani ahur indriyabhya param manha manasastu para buddhir yo buddhya paratastu saha. The working senses are superior to dull matter. Mind is higher than the senses. Intelligence is higher, still higher than the mind, and he, the soul, is even higher than the intelligence. Bhagavad Gita 3.4. Okay. Professor Durkheim, earlier today you spoke about the false ego. Did you mean that real ego is the soul? Srila Prabhupada, yes, that is a pure ego. For instance, now I have this 78-year-old Indian body, and I have this false ego that thinks I'm an Indian, I'm this body. This is misconception. Someday this temporary body will vanish. I will get another body, another temporary body. It's just a temporary illusion. The reality is that the soul, based on its desires and activities, migrates from one body to another. Professor Durkheim, can consciousness exist apart from the material body? Yes, Prabhuji. Yeah. Srila Prabhupada, yes. Your consciousness, the soul, does not need a material body. For instance, when you dream, you forget your present body, but you still remain conscious. The soul, the consciousness, is like water. Water is pure, but as soon as it falls from the sky and touches the ground, it becomes
muddy. प्रभु जी ऐसा करें क्या, ये पूरा कन्वर्सेशन चल रहा है तो ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप शीला प्रभुपाद मतलब बन जाइए और माता जी हम्म, प्रोफेसर बन जाएंगी, तो जहाँ पे आपका आएगा प्रभुपाद का वहां बोल लीजिए, पढ़ लीजिएगा, और जहाँ पे ठीक है। माता जी, यस माता जी। Professor Durkheim. Yes. Similarly, we are spirit souls, we are pure, but as soon as we leave the spiritual world and come in contact with these material bodies, our consciousness becomes covered. The consciousness remains pure, but now it is covered by mud, this body. And this is why people are fighting. They are wrongly identifying with the body, thinking, I am German, I am English, I am black, I am white, I am this, I am that. So many bodily designations. These bodily designations are impurities. This is why artists sculpt or paint nude figures. In France, for example, they regard nakedness as pure art. Similarly, when you understand the nakedness or true condition of the spirit soul without these bodily designations, that is purity. Why does it appear to be so difficult to understand that one is different from the body? It is not difficult. You can experience it. It is only because of foolishness that people think differently. But everyone really knows I am not this body. This is very easy to experience. I am existing. I understand that I have existed in a baby's body. I have existed in a child's body and also in the boy's body. I have existed in so many bodies and now I am in an old man's body. Or for example, say you have now put on a black coat. The next moment you may put on a white coat, but you are not that black or white coat. You have simply changed coats. If I call you Mr. Black Coat, that is my foolishness. Similarly, in my lifetime, I have changed bodies many times, but I am not any of these bodies. This is real knowledge. And yet, is not there a difficulty? For instance, you may have already intellectually understood very well and that you are not the body, but you may still have the fear of death. Does not that mean you did not understand it by experience? As soon as you have understood by experience, you should have no fear of death because you know that you can't really die. Experience is received from a higher authority, from someone who has higher knowledge. Instead of my trying to experience for years and years that I am not this body, I can take the advantage from God or Krishna, the perfect source. Then I have experienced my deathlessness by hearing from a bona fide authority. That is perfect. Yes, I understand. अमित प्रू पढ़ सकते हैं अमित प्रू. यस हमें थ्रू कृष्ण म्यूट पे हैं. चलिए ठीक है मैं पढ़ता हूँ शायद म्यूट पे. Therefore the Vedic instruction is Yanartham cha gurum ivavigachet. In order to get first class experience of the perfection of life, you must approach a guru. And who is a guru? Whom should I approach? I should approach someone who has heard perfectly from this guru. This is called the disciplic succession. I heard from a perfect person and I distribute the knowledge in the same way without my change. Lord Krishna gives us knowledge in Bhagavad Gita and we distribute the same knowledge without changing it. Over the past 20 or 30 years, there has been a great awakening of interest in spiritual topics in the western part of the world. But on the other hand, if the scientists want to eliminate the human cell, they are well on the way to doing it with their atomic bombs and other technical innovations. If they want to guide humanity to some higher goal, however, then they have to stop looking at man in a materialistic way through their scientific spectacles. They must look at us as we are conscious selves. The goal of human life is self realization or God realization, but the scientists do not know that. Modern society is presently led by blind and foolish men. The so called technologists, scientists, and philosophers do not know that the real aim of life, and the people themselves are blind as well.
So we have a situation in which the blind are leading the blind. If a blind man tries to lead another blind man, what type of results can we expect? No, this is not the process. One must approach a self-realized person if he wants to understand the truth. More guests enter the room. So Disciples. Udit Pro, you are the disciple. Yes, Guruji. Yes. Srila Prabhupada, these gentlemen are professors of theology and philosophy. And this is Dr. Daira. He is the leader of Society for Study of Yoga and Integral Philosophy here in Germany. Srila Prabhupada greets them and the conversation resumes. Yes, Professor. May I ask another question? Is not there another level of experience that opens the door to some deeper consciousness for the common man? Yes, that experience is described by Krishna in Bhagavad Gita. Deno ismin yatha dehe komaram yovnam jara tata dehantar praptir dhiras tatra namuyati. As the embodied soul continually passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. The self-realized soul is not bewildered by such a change. But first, one must understand the basic principle of knowledge that I am not this body. When one understands this basic principle, then he can advance to deeper knowledge. It seems to me that there is a big difference between the Eastern and Western approaches to this problem of body and soul. In the teachings of the East, you have to become free of the body, whereas in Western religions, a person tries to realize the spirit within the body. This is very easy to understand. We have heard from Bhagavad Gita that we are a spirit, that we are within the body. Our sufferings come about because of our identification with the body. Because I have entered into this body, therefore I am suffering. So either Eastern or Western, my real business should be how to get out of this body. Is that point clear? Yes, The term reincarnation means that I am a spirit soul who has entered a body. But in my next life, I can enter another body. It may be a dog's body, it may be a cat's body, it may be a king's body, and there will be suffering either in the king's body or in the dog's body. These sufferings include birth, death, old age, and disease. So, in order to abolish these four kinds of sufferings, we have to get out of the body. That is man's real problem to get out of this body. this takes many lives. It can take many lives, or you can do it in one lifetime. If you understand in this life that your sufferings are due to this body, then you should inquire how to get out of this body. And when you get that knowledge, you will know the trick how to get out of this body immediately. But that doesn't mean that I have to kill the body, does it? Does not it mean that I realize my spirit is independent from my body? No, it is not necessary that the body be killed. But whether your body or not, you have to leave your present body or accept it. That is nature's law, and you cannot avoid it. It seems that there are some points here which are in accordance with Christianity as well. It doesn't matter whether you are Christian, Muslim, or Hindu. Knowledge is knowledge. Wherever knowledge is available, you must pick it up, and this is knowledge. Every living being is imprisoned within a material body. This knowledge applies equally to Hindu, Muslim, the soul is imprisoned within the body and must therefore be ceased. Do we all want to live in a wonderful, blissful soul with immortality? This Hare Krishna, Guruji. ठीक है Guruji, voice break होगी Guruji. हाँ मुझे तो अभी अभी भी हो रही है. अभी आ रही है क्या ठीक आवाज यस गुरुजी, यहाँ से ठीक है ये मिस हो गया गुरुजी.
This knowledge applies equally to Hindus, Muslims, Christians, everyone. The soul is imprisoned within the body and must therefore undergo birth, death, old age, and disease. But we all want to live eternally. We want full knowledge, we want full blissfulness. To attain this goal, we must get out of the body. This is the process. Okay. Professor Dara, you stress the point that we must get out of the body, but shouldn't we accept our existence as human beings? You propose accepting our existence as human beings. Do you think that existing within this human body is perfect? No, I don't say it is perfect, but we should accept this and not try to create some ideal situation. You admit that your condition is not perfect, therefore, the correct idea should be to discover how to become perfect. But why do we have to become perfect as spirit? Why can't we become perfect as humans? You have already admitted that your situation within this human body is not perfect. So, why are you so attached to this imperfect situation? This body is an instrument through which I can communicate with other people. That is also possible for the birds and beasts. But there is a big difference between talking of birds and beasts and our talking. What is the difference? They are talking in their community, you are talking in your community. Okay. Professor. I I believe the real point is that the animal has no self consciousness. He does not understand what he is in essence. और ये क्रिश्चियनिटी वाला पॉइंट लेके आए प्रोफेसर Okay. क्रिश्चियन यही बोलते हैं ना Hmm. yes that is a real point a human being can understand what he is the birds and bees can understand so as humans we should endeavor for self realization and not simply act on a level of birds and bees therefore the Vedanta Sutra begins with the aphorism Atharva Brahma Jigyasa. Human life is meant for inquiring about the absolute truth. That is the aim of human life, not eating and sleeping like the animals. We possess extra intelligence with which to understand the absolute truth. In Srimad Bhagavatam it is said, Kamasya Nendriya Pratir Labho Jive Yavata Jivasya Tattva Jigyasa Nartho Yascheta Karma Bhi. Life's desire should never be aimed at gratifying the senses. One should desire to live only because human life enables one to inquire about the absolute truth. This should be the goal of all works. But is it just a waste of time to use our bodies to do good to others? You cannot do good to others because you do not know what good is. You are thinking of good in terms of the body, but the body is false in the sense that you are not the body. For instance, you might occupy an apartment, but you are not that apartment. If you simply decorate the apartment and forget to eat, can that be good? I don't think this comparison of the body with the room is very good. That is because you don't know what that you are not the body. But if we go out of a room, the room remains. When we go out of the body, it doesn't remain. Eventually, the room will also be destroyed. What I mean to say is that there must be very intimate connection between the body and the soul, a kind of oneness at least, as long as we are alive. No, that is not the real oneness. There is a difference. For instance, the room we are presently in is important to me only as long as I am alive. Otherwise, it has no importance. When the soul leaves the body is thrown away, even though it was very dear to its owner. But what if you don't want to separate from your body? It is not a question of what you want. You must separate as soon as your death comes. Your relatives will throw out your body. Perhaps it makes a difference if a person thinks, I am the spirit and I have a body, rather than I am the body and I have a soul. Yes, it is a mistake to think that you are the body and possesses a soul. That is not true. You are the soul and you are covered by a temporary body. The soul is the important thing, not the body. For example, as long as you were a cord, it is important to you. But if you become torn, you throw it away and purchase another cord. The living being constantly experiences the same thing. You separate from this present body and accept another body. That is called death.
The body which you previously occupied becomes unimportant, and the body you now occupy becomes important. This is the big problem. People give so much importance to the body that within a short few years will be exchanged for another one. So chapter 3, it's 7:26. So we should continue the chapter 3 or not? नहीं 5 मिनट बचे हैं, वैसे डिस्कस भी कर सकते हैं. Okay, Guruji. Yes. हाँ अमित प्रभु, आवाज आ रही है क्या आपको? हरे कृष्णा प्रभु. हाँ हरे कृष्णा. हाँ प्रभु, तो मुझे लगा पता नहीं आवाज आ रही है कि नहीं. ठीक है, चलेगा. ठीक है. So हाँ, you can start with the discussion realizations, Guruji. मतलब वैसे तो नॉर्मल कन्वर्सेशन ही था इसमें. yes, ऐसा कुछ वो मेनली रीइंकार्नेशन के बारे में ही प्रभुपाद डिस्कस कर रहे हैं. तो वो मुझे ठीक लगा रूम वाला पॉइंट, जैसे प्रभुपाद रूम से कंपेयर कर रहे हैं और वो प्रोफेसर टारा बहुत स्मार्टली बोल रही है कि ठीक है, रूम के केस में तो ये एनालॉजी ठीक नहीं लग रही मेरे को, क्योंकि रूम से निकलने के बाद रूम तो फिर भी रह गया, बॉडी से निकलने के बाद तो बॉडी वैसी नहीं रहती है. तो प्रभुपाद बोले नहीं, बॉडी डिस्ट्रॉय आती है, रूम भी इवेंचुअली डिस्ट्रॉय हो जाएगा किसी ना किसी पे. तो आई लाइक दैट. थैंक यू प्रभु. Thank you, Guruji. Mataji, you want to add something? जो एक वो एग्जांपल अच्छा लगा था जो प्रभुपाद जी ने दिया था कि जैसे वाटर है वो प्योर ही होता है जब तक स्काई में रहता है, क्लाउड्स में. जब जैसे ही वो नीचे आ जाता है तो वो इम्प्योर हो जाता है. सिमिलरली सोल के साथ भी है कि वो बॉडी के साथ अटैच हो जाती है जब तक, वरना तो प्योर ही होती है सोल भी. तो वो एग्जांपल मुझे अच्छा लगा था प्रभुपाद जी ने दिया. Yes. एक तो वो प्रभुपाद इसमें बीच में रेफर कर रहे थे कि जैसे हम रात में सपना देखते हैं तो कोई और ही बॉडी में घूम रहे होते हैं, है ना, और जितने सपने देख रहे हैं उतने मतलब वो बॉडी बदलती रहती है, और दिन में जब हम होते हैं वो बॉडी भूल जाते हैं जो रात में हमने सपने में देखी थी. तो एक्चुअली दिस इज द रियल स्टेट कि जो सोल है ना, मतलब वो भी जब बॉडी चेंज करती है तो पुरानी बॉडी भूल जाती है, बट इट इज कीप ऑन चेंजिंग द बॉडीज. तो एक तो वो मेरे को अच्छा लगा कि मतलब ऐसा लगता है कि ये कभी कभी ऐसा महसूस भी होता है कि ना ये जीवन में हम सपना देख रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि नींद से उठेंगे तो कुछ और ही जीवन मिल जाएगा. तो ये मतलब एक तो ये मतलब ये चीज आती है माइंड में कि हाँ ये टेम्परेरी है, बहुत लगता है ऐसा कि भाई ये बहुत टेम्परेरी, एक सपने जैसा ही है ना. तो ये चीज, और दूसरा एक वो अच्छा लगा मेरे को, इसमें भगवत गीता में एक श्लोक बताया था, इसमें उसमें भगवान बता रहे हैं कि शरीर जैसे बदलता है, बच्चे से आदमी बड़ा होता है, फिर बुढ़ापा आता है, तो बॉडी चेंज होती रहती है. तो इसमें नहीं आता है. यस, तो इट वाज ऑलरेडी मेंशन इन भगवत गीता. जब साइंस अब डिस्कवर कर रही है ना कि 7 साल में सेल्स बदल जाते हैं, बॉडी बदल जाती है ना, तो इट वाज ऑलरेडी देयर इन भगवत गीता. तो वो मतलब इट वाज लाइक रिवीलिंग द ट्रुथ वाला एक्सपीरियंस फॉर मी कि भाई हाँ शास्त्र में तो ये ऑलरेडी दे रखा है, और ये अभी अभी डिस्कवर करें, ये ज्यादा पुराना नहीं है कि सेल बदलते रहते हैं, बॉडी बदलती रहती है. यस, वो चीज मतलब मेरे को अच्छी लगी. वो एटर्निटी शो करती है भगवत गीता की, ये सब चीजें कि साइंस जो डिस्कवर कर रही है, रिसर्च कर रही है, वो ऑलरेडी इट इज ऑलरेडी देयर इन शास्त्र. यस जी. इसमें एक और पॉइंट है कि जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं कि भाई ये तो एक सपने की तरह है. तो मायावादी भी बोलते हैं सपना ही है. मायावादी इसलिए कहते हैं कि संसार माया है, ये रियल नहीं है, और रियल वर्ल्ड अपना निराकार में मिलना है. तो बट हम लोग कहते हैं कि नहीं, ये संसार भी रियल है, कृष्णा भी रियल है, और जबकि एनालॉजी सेम दे रहे हैं सपने की. तो इसको कैसे समझेंगे? थोड़ा डीप हो गया ये, थोड़ा मतलब क्वेश्चन तो क्लियर हो गया ना? वैसे क्वेश्चन क्लियर हो गया ब्रो जी, है ना?
यस हम प्रभु। लोग भी बोल रहे हैं कि ये सपना ही है, प्रभात बोल रहे हैं कि नहीं देखो सपना है, जैसे सपने में आप दूसरी जगह चले जाते हैं वैसे ही है। और मायावादी भी बोलते हैं कि सपना ही है, पर वो कह रहे हैं कि जब सपना है ये तो ये माया है, और हम कह रहे हैं कि नहीं ये भी रियल है क्योंकि कृष्णा भी रियल है, कृष्णा का कुछ भी क्वेश्चन क्लियर है क्या उसमें? क्वेश्चन क्लियर हो गया प्रभु जी। ज्यादा लोग नहीं, नहीं कुछ। हाँ, क्वेश्चन क्लियर है। उसमें वैष्णव लोग समझाते हैं सीनियर डिवोटीज की, प्रभुपाद ने समझाया कन्वर्सेशन में कि जैसे कोई सपना देख रहा है ना, तो सपना ऐसा सपना रियल है, सपने में क्या गड़बड़ है, वो सपना देख रहा है तो जो जो भी एक्टिविटीज वो कर रहा है सपने के लेवल पे कर रहा है ना, इल्यूजन में कर रहा है, बट वैसे तो वो रियल है ना सपना, सपने को आप नकार नहीं सकते। तो मायावती जैसे कह रहे हैं कि माया है इसे नकार दो, तो माया है हमें पता है, बट ऐसा नहीं है कि हम उस माया को कृष्ण की सर्विस में यूज नहीं कर सकते। माया क्या है? जो भी हमें कृष्णा से दूर कर रही है वो माया है, हमारा डेफिनेशन ये है। पर अगर इसी को कृष्णा की सर्विस में यूज करें तो ये रियल भी है, फिर कहाँ माया रह गई। वो लोग क्यों बोलते हैं कि माया है? क्योंकि उनके पास कोई लविंग ऑब्जेक्ट कृष्णा नहीं है, तो क्योंकि वो स्पिरिचुअल लाइफ को भी नकारते ही हैं, सबको वो सब बोलते हैं निराकार में जाके मिलना है, तो इसलिए सपने को भी जाके वो पूरी तरह नकार देते हैं। अगर नहीं नकारेंगे तो उनका जो अल्टीमेट फिलॉसफी है कि निराकार में जाके मिलना है वो डिफ्यूट हो जाती है। दोबारा समझाऊं क्या? हाँ जी, क्लियर हो पा रही है? एक बार दोबारा। हाँ, तो मान लीजिए कि मैं सपना देख रहा हूँ और सपने में कुछ चल रहा है, तो वो सपना तो रियल है, सपना रियल है मतलब क्या मैं सपना नहीं देख रहा हूँ? हम्म हम्म है ना? तो इसी तरह क्या होगा कि लिविंग एंटिटी जो है वो रियल में भगवान का दास है, बट जब वो यहाँ पे आया, जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो प्योर ड्रॉप होती है, तो धरती का टच होते ही वो क्या हो गई, मर्डी हो गई, हम्म कीचड़ में सन गई, वो खराब हो गई। इसी तरह वो सोल रियल है, सोल का अपना अस्तित्व है, पर हम्म जैसे ही वो मटेरियल वर्ल्ड में आती है, मतलब मटेरियल वर्ल्ड में आके वो कंडीशन हो जाती है और यहाँ के हिसाब से काम करने लगती है। हम्म कंडीशनिंग का मतलब समझ गए कि जैसे कोई व्यक्ति कोयले के खान में जाए काला हो जाए, तो उसकी कंडीशनिंग हो गई कोयले के खान की तरह। यस प्रभु जी। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे कोयले की खान में जाके कंडीशनिंग में काला हो गया, हम्म इसी तरह मटेरियल वर्ल्ड में आते ही उसकी कंडीशनिंग हो जाती है, हम्म और यहाँ पे रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में वो काम करने लगता है। हम्म अब वो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थी, उसके कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो ये वो सपना ही देख रहा है एक तरह से, जो हम्म एक्टिविटीज यहाँ की कर रहा है, हम्म क्योंकि वो यहाँ की एक्टिविटीज को बिलोंग ही नहीं करता है। हम्म जैसे अगर कोई व्यक्ति सोते हुए सोचने लगे कि मैं आसमान में उड़ रहा हूँ, हम्म तो ये एक तरह से सपने की तरह है, वो एक्चुअली बिलोंग तो उस बेड को करता है ना जहाँ पे लेटा है, हम्म पर वो फालतू के काम में लग गया उड़ने के चक्कर में, उसे लग रहा है मैं उड़ रहा हूँ, वहाँ पे एंजॉय कर रहा है, वहाँ पे दुख मना रहा है, लेटे लेटे सोच रहा है मैं उड़ रहा हूँ, रो रहा है ना? हम्म इसी तरह वो व्यक्ति जब संसार में आया और यहाँ की एक्टिविटीज में लग गया, तो यहीं के दुख को दुख, यहीं के सुख को सुख मान बैठा वो। हम्म पर ये रियल भी तो है एक तरह से। अगर वो लेटरे के कंटेक्स्ट में हम देखें कि व्यक्ति जब सो रहा था, तो जब सोते सोते वो सपना भी देख रहा था, बट हम्म एक्चुअली वो सपना देख रहा है, हम उसे नकार नहीं सकते कि बिल्कुल नहीं सपना नाम की कोई चीज होती नहीं है ना, सपना देख तो रहा है वो। बिल्कुल बिल्कुल। यस। हम्म इसी तरह स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट में अगर हम देखें, तो जैसे वो व्यक्ति स्पिरिचुअल बॉडी था, संसार में आया, काम में लग गया, तो ये दोनों ही चीज रियल है, हम्म पर ठीक। एक्चुअली वो अपनी रियल पोजीशन पे नहीं है, वो प्रॉब्लम है बस, हम्म है ना? यस प्रभु जी। तो बस ये पॉइंट है कि अगर लेटा हुआ व्यक्ति को पता चल जाए कि नहीं तो तेरा जो मेन बिजनेस है वो उड़ना नहीं है, यहाँ हम्म पे लेटा रहे, रेस्ट कर। इसी हम्म तरह जो स्पिरिचुअल व्यक्ति जो मटेरियल में आ गया, उसे पता चल जाए कि नहीं यहाँ की चीजों में लगना तेरा बिजनेस नहीं है, तो हम्म बस भगवान की सेवा कर, तो हम्म वो जगह वही है, फिर वो मिथ्या कहाँ है, यस प्रभु जी। फिर तो वो सपना है ही नहीं। हम्म हाँ प्रभु जी। तो प्रभु जी पॉइंट तो मतलब ये है ना कि वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग कह रहे हैं कि वैकुंठ से आ रहे हैं और एक तरह का ये सपना है और इसे इसे छोड़ के हमें वापस वैकुंठ जाना है। वो लोग कहते हैं कि हम ब्रह्म ज्योति से आए हैं, हाँ ये सब छोड़ के हमें वापस ब्रह्म ज्योति पे जाना है। तो मतलब इस पॉइंट से हाँ। ये कैसे प्रूव हुआ कि वैकुंठ रियल है या फिर ब्रह्म ज्योति रियल है, या फिर हमें कहाँ जाना चाहिए? नहीं उसके लिए तो शास्त्र है ही, हम्म यहाँ तो सपने की एनालॉजी की बात चल रही थी, अच्छा। समझ रहे क्या? यहाँ पर तो सपने की एनालॉजी की बात चल रही थी कि सपने की एनालॉजी लेके वो हम्म ये बोलते हैं कि सब जैसे सपना जो है
वो आप टेम्पररी फेज है, तो हम ये मानते हैं टेम्पररी है, बट वो कह रहे हैं कि सपना तो मतलब है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, माया है। बोले जैसे सपना एकदम बेकार की चीज है, वैसे ही संसार भी बेकार है, मिथ्या है, बिल्कुल हमें लग रहा है रियल है, बट ये रियल नहीं है, ये इल्यूजन है पूरा। ये मायावाद फिलोसफी। हम कहते हैं नहीं, संसार भी रियल है, कृष्णा ने ही क्रिएट किया है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी रियल है, बट इतना ही डिफरेंस है कि संसार टेम्पररी है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड इटर्नल है। अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी वो ब्रह्म ज्योति को सब सब कुछ मानते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जो भगवान श्री हरि हैं, उनके चरण कमल हमारा अल्टीमेट गोल है। वो कहते हैं नहीं नहीं, उसके अंदर कुछ है ही नहीं, बस ब्रह्म ज्योति लास्ट है। तो इसके लिए हम शास्त्रों का रेफरेंस भी है, और प्रभुपाद का वो एग्जाम्पल भी है सूरज वाला, कि जैसे सूरज खिलता है, उसका प्रकाश होता है, तो प्रकाश अल्टीमेट नहीं है। सूरज के अंदर भी बैठे सूर्य थे, वो अल्टीमेट हो गए। वैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ब्रह्म ज्योति अल्टीमेट नहीं है, बट ब्रह्म ज्योति के भी अंदर जब भगवान धाम में जो बैठे हैं, वो अल्टीमेट है। रोशनी से तो रोशनी आ ही नहीं सकती ना। रोशनी से रोशनी कैसे आ जाएगी? हाँ, जैसे कल भी मैं सोच रहा था, अभी मान लीजिए कि दीवार में हम घुट्टू मारे दीवार में, मान लीजिए दीवार में अगर घुट्टू मारा जाए, तो बहुत जोर से अगर घुट्टू मारा तो इक्वली फोर्स लगती है ना, एक्शन रिएक्शन हम लोग बोलते हैं कि दीवार में अगर हम एक्शन मारे तो रिएक्शन आएगा आपको, तो दर्द होगा आपको। तो वो जो शक्ति दीवार से आई है, उसके लिए शक्तिमान तो होना चाहिए ना पीछे। समझ रहे हैं? मतलब शक्ति बिना शक्तिमान के कैसे हो सकती है? तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ लिविंग एंटिटीज में ही भगवान है। एक्चुअली वो शक्तिमान रूप में हर एटम में प्रेजेंट है, इसीलिए वहां पे फोर्स है, इसलिए वहां पे हमें इक्वल रिएक्शन आ रही है, वरना तो आएगी नहीं रिएक्शन। हम मारेंगे और हाथ में कुछ होगा ही नहीं। इसलिए वो हर जगह प्रेजेंट है, हर जगह। ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे बोलते हैं कि नहीं, धरती में ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो फोर्स है तो मतलब इसका क्या है, मतलब उनके पीछे फोर्स है, तो उसको कोई पॉजेस भी तो कर रहा है ना उस फोर्स को। फोर्स का अपना तो कोई अस्तित्व है नहीं। जैसे शरीर के अंदर बल है, पर अगर प्राण ही निकल जाए शरीर से, तो शरीर का बल क्या करेगा, चाहे कितना ही बड़ा बॉडी बिल्डर क्यों ना हो, WWF का फाइटर ही क्यों ना हो। अगर वो शक्तिमान ही चला गया शरीर से, सोल ही चली गई, तो शक्ति कहाँ बची? इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्शन रिएक्ट, कहीं भी हर एटम में भगवान है, इसीलिए वो इक्वल रिएक्शन और ये सब प्रिंसिपल काम कर रहे हैं नेचर के। करेक्ट है ना? ओके, अमित प्रभु, आप कन्विंस हो गए हो? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। आप कन्विंस हो गए इस बात से कि भगवान हर जगह है? क्या कह रहे हो सर? ओके, ठीक है। स्वाति, आपको कोई पॉइंट है क्या? अदरवाइज वी कैन स्टॉप। नहीं नहीं। थैंक यू। पंचकलितरूपेश्च कृपा सिन्धुः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। Hare Krishna, thank you for joining. हरे कृष्ण।